الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة ومعلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم محترم مکرم سامعین کرام حاضرین کرام Srodhar Murabbi Ohala and my beloved elders and brothers of Islam in Islam and mothers and sisters listening from home. Inshallah 25 তারিখ ডিসেম্বর রবিউল আউয়াল মাসের শেষ হওয়ার দিকে আর রবিউল সানি মাস আরম্ভ হওয়ার দিকে আমরা বছরিক প্রোগ্রাম চলা হয় ফিরা ইনশাল্লাহ সিরাতুন নবী হিসাবে আর সিরাতুন নবী নামে আর সম্মেলনে ইনশাল্লাহ প্রোগ্রাম হইব আর সিরাতুন নবী ও মাসেও বয়ান করা হয় বেশি যেহেতু হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্ম হয়েছে বিলাদত হয়েছে তাই তশরিফ আনছেন রবিউল আউয়াল মাসে এবং দুনিয়া থেকে গেছেন রবিউল আউয়াল মাসে এর লাগে মসজিদে হলতো সিজন হইল সিরাতুন নবীর সিজন সিরাতুন নবী মিলাদুন নবী এক জিনিসও যে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী ওয়ালাইকুম সালাম হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বায়োগ্রাফি লাইফ অফ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজুরের জিন্দেগি হুজুরের উঠা বসা হুজুরের খাওয়া দাওয়া হুজুরের প্রত্যেকটা আদা প্রত্যেকটা হুকুম প্রত্যেকটা সুন্নত সব কিছু মিলাইয়া ওয়ালাইকুম সালাম এটারে সিরাতুন নবী হয়। তো 25 তারিখ ইনশাল্লাহ প্রোগ্রাম হইব সকল তশরিফ আনবা বাংলা ইংলিশ বাংলা হইব আর যে তশরিফ আনবা গেস্ট স্পিকার তাইনো খুব বালা আমার থেকে আরও বালা বাংলা ইংলিশ জানান হলতা জানান আপনারা খুশি হইবা বালাও পাইবা শান্তিও পাইবা এর লাগি সোমবারে 25 তারিখ তশরিফ আনবা ইনশাল্লাহ আর আসর থাকি মাগরিব পর্যন্ত হইল গিয়া আমরা রোতাইন্তর কম্পিটিশন মক্তবর কম্পিটিশন Asr to Maghrib we have our yearly competition for the kids, for the Maktab kids. Maktab के बच्चों के लिए 25 तारीख जो है प्रोग्राम भी है। फिर मगरिब से लेके इशा तक, Isha will be about 6 o'clock or half 6 according to the audience and timing. Our guest speaker Mawlana Abdullatif from London shall be coming. Very good speaker, Bangla, Urdu, English, everything inshallah. And elders will be happy, children will be happy, you know. He's been Luton, Bedford, London, everywhere.
up and down the country. They're 4 brothers, very famous in the Bangladeshi community, and very good alims, very good scholars, and they're serving Deen, mashallah, very actively up and down the country. Till then, inshallah, amra I khom shomar bitra forte Jum'ah sara to amra ar faina manchore to I khom shomar bitra zototuku faraz hai Seeratul Nabir Zekuno Gosha, Zekuno aspect, Seeratul Nabir Zekuno dik, Seeratul Nabi की कोई भी एस्पेक्ट हो, कोई भी हिस्सा हो, छोटा बड़ा, सुबह शाम, यानी नबूवत से पहले की ज़िंदगी, नबूवत के बाद की ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी, इज़्दिवाजी ज़िंदगी, डोमेस्टिक लाइफ, मैरिज लाइफ, बिफोर नबूवा, बिफोर प्रॉफिटहुड, आफ्टर प्रॉफिटहुड, बदर के मौके पे all the battles that he took part in, যত যুদ্ধ হতো শরীক হইছেন, উহুদের যুদ্ধ, সব কিছু জন্মতাকে লইয়া মত পর্যন্ত, মদিনার জিন্দগি, মক্কার জিন্দগি, একটা জিনিসের উপরে যদি আত লাগাইন আর ফিক হরইন আর চুজ হরইন, তে কিয়ামত পর্যন্ত খালি গুণগান গাইতে পারবা, কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণগান শেষ হইত না। ইমাম সাদি রহমতুল্লাহ আলাইহি ইজ এ ভেরি বিগ পোয়েট। ইমাম সাদি রহমতুল্লাহ বহুত বড় বুজুর্গ আর বহুত বড় কবি গুজরিয়া গেছেন, ফার্সি ভাষা তাই বহুত কালেকশন। তো তাইন একবার আল্লাহ রসুলের বয়ান করতে করতে, गुनगान गाइते गाइते थाइन बड़ो परेशान हो गए। इमाम सादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग थे और बहुत बड़े जो है शायर थे, फारसी ज़ुबान के अंदर जो है उनकी मशहूर है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह। तो थाइन अखबार अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बयान हो रहा, गुनगान गा रहा, दुरूद शरीफ हो रहा, नात हो रहा, नशीद हो रहा, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एट्रिब्यूट, सिफात, गुण, क्वालिटीज, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तारीफ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, এইগুলা সব বয়ান করা। বয়ান করতে 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 তাই আমরা বয়ানের হিসেবে আমরা কইনানি বালাগাল উলা বিকামালিহি, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही। ये जो 3 फिक्रे हैं, ये है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की है। तो हज़रत शेख सादी उस दिन मैं बयान सुन रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, और जो है मुझे बहुत खुशी हुई सुन के कि ये तो पता नहीं किधर से मैं पढ़ रहा हूँ हर जुम्मा को, ये तो सुनी सुनाई है। बलगल उला भी कमाल ही, हमारे उस्ताद असातिज़ा पढ़ते रहते हैं तो हम भी पढ़ते रहते हैं। अब कोई पूछे कि इसकी दलील क्या है, तो मुझे उस दिन तक पता नहीं था। तो वो मैंने बयान सुना यूट्यूब में, तो मैं हैरान रह गया। हमारे पाकिस्तान के उस्ताद जो है बयान कर रहे थे, तो অত দিন খালি বালাগল উলা আমরা পড়ি আর হলে পড়াইয়ার, দুইটা কই থেকে বার হইছে আমার কোনো আইডিয়া নাই। আমরা উস্তাদ হলতে, মুরব্বী হলতে, কাবির হলতে ফোর্সন, তো তারারে কপি করি করি ইমিটেট করি করি আমরাও করি আর বালা জিনিস দরুদ শরীফ है। तो लेकिन कोई अगर पूछे खे যদি জিকায় कि भाई इटार रेफरेंस किता, इटार दलील किता होते कि बार होते अटके खिलाफ ने सुनी सुनाया, उस्तादों ने जो है सुनाया हुआ है और काफ़ी अरसे से इस तरह चला आ रहा है। तो ये लगे আমরা উস্তাদও বলতে কি হুঁচি লাগে আমরাও করি আর, কিন্তু হিদিনকো বয়ানো ইউটিউবও একজনে ওয়াজ কররা, বহুত বড় তাইন মুনাজির মাশাআল্লাহ। তো তাইন খয়রা যে হযরত শেখ সাদি রহমতুল্লাহ আলাইহি আল্লাহ রসুলের গুণগান গাইতে গাইতে বয়ান করতে করতে তাই थारे मुख तक ऑटोमेटिक था तो कुदरती शायर असला शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह तरफ तक, जिस तरह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह है और हमारे बांग्लादेश में जिस तरह कवि नजरुल इस्लाम साहब है, थरा गिफ्टेड असला अल्लाह तरफ तक उन्हें मानो शसद नहीं इन इंग्लिश की से गिफ्ट ऑफ द गॉड। तो education wise they might be a little bit less compared to other people, many other quality wise and qualification wise they might be a bit less, paperwork wise they might be a bit less. But some people Allah subhanahu wa ta'ala has created that from birth naturally they are gifted in the heart and soul. Automatically, without any mehnat, without any effort, subah, sham, morning, evening, their mouth and their tongue is, full of, wise words of wisdom, full of shairana kalam, full of, poetry related verses. And automatically they are making these verses morning and evening. They're having a cup of tea and their tongue is moist, mashallah, with the words of wisdom upon the tarif and life and attributes and sifat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam regarding Islam. Like Hassan bin Sabit radhiyallahu anhu used to sing the nasheeds every Jum'ah, every Friday in front of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upon the instruction of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So this is no bid'ah or anything because it's coming from Hassan bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu. Secondly, Sheikh Saadi rahmatullah alayhi, automatically he is the creator, he is the author of these verses. He said, Balaghal ula bi kamalihi, kashafat duja bi jamalihi, hasunat jamiu khisalihi. Sheikh Saadi rahmatullah alayhi kan khusay.
Now he wanted to finish it off as a fourth couplet, fourth verse. Then says later, because it's not a normal story or normal writing, you just write anything on paper. You know, he has to rhyme, he has the pose, the rhythm, the style, the sound, the effect, the feeling, the spirituality, everything has to fall in place. So a famous person and a very, talented person like Sheikh Sadi Rahmatullah Alayhi, he wanted to finish it off very nicely. So he was confused. So how shall I finish this off regarding Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam's kamalat, regarding Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam's sifat, regarding the life of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Just in 4 verses, 3 verses doesn't look right. Definitely there should be something, somehow I can finish it off very nicely. So he slept that night. उस रात वो इस तरह सोचते सोचते और हैरान परेशान होके सो गए. And he saw, mashallah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam in his dream. He saw, time sinta khori khori gumai gisungi zami kan shashkor tam gila. तीन लाइन बनाई हमारे एक लाइन बराया अल्लाह रसूल जिंदगी रे थम्मत बिल खैर खरी दोना शुद्ध खरिया शेष खरी दोना किला आमी शेष करता तो ताई गुमाई की संगी गुमाई याद देखो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ्न में से अल्लाह रसूल खुला से ओ सादी तुम चिंता करने हो रहा है ओ सादी तुम फिक्र क्यों पड़े हो इतना परेशान क्यों हो क्या हो गया. तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके शान में और आपके तारीफ में मैंने ये 3 फिक्रे बहुत मुश्किल से और सोच के तैयार किए. एक और फिक्रा मुझे चाहिए जिस पर मैं इसको ख़त्म करूं और क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए और पढ़ने वालों के लिए और सुनने वालों के लिए और पढ़ाने वालों के लिए और सुनाने वालों के लिए एक मीरास के तौर पर एक यादगार के तौर पर एक चीज़ रह जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ के ऊपर लोग दरूद शरीफ के साथ साथ इसको भी इस्तेमाल कर सकें. ज़िया रसूलुल्लाह हमें परेशान हो गई वालेकुम सलाम जे 3টা লাইন বানাইছি আপনার লাগে আপনার প্রশংসার উপরে আপনার তারিফের উপরে হ্যাঁ আপনার সিফাতের উপরে আপনার কামালাতের উপরে আরো একটা লাইন আমার দরকার যেটা পড়িয়া আমি এটারে শেষ করতাম পারি আর মানুষ এটারে ইউজ করবা ব্যবহার করবা সুন্দর করিয়া আর আপনার দরুদ শরীফের লাগে মিলাইয়া পড়বা কিয়ামত পর্যন্ত লিখক হলতর লাগি বৈজ্ঞানিক হলতর লাগি আর উলামা হলতা কি ইমাম হলতর লাগি আর মুসলমান হলতর লাগি বহুত বড় ফায়দা হইব মুফিদ হইব এবং বহুত বড় বেনিফিশিয়াল জিনিস হইব. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा खुला जो सादी तुम तो परेशान हुई किसोगी ओ जिनिसर लगी तुम खुला सल्लु क्या है सल्लु अलैहि व आलिहि कह दो सल्लु अलैहि व आलिहि और क्यों परेशानी करते हो बस ख़त्म हो गया. तो क्या हो गया बलगल उला बिकमालिहि कशफत दुजा बिजमालिहि हसनत जमीउ खिसालिहि सल्लु अलैहि व आलिहि तुम खुला सल्लु अलैहि व आलिहि बस फिनिश वही के लोग तुम्हारे शेर शायरी तमाम आर की चुना है. तो ताकि खुशी हुई है सुबह अल्लाह वो खुश हो के जो है सूरज की तरह चेहरा बना के जो है उन्होंने सुबह किया और इसको पढ़ के ख़त्म किया सल्लु अलैहि व आलिहि और कलम बंद करके किताब के ऊपर इसको छपवा के पब्लिश करा के क़यामत तक के लिए हमारे लिए नमूना छोड़ के गए और मीरास के तौर पर छोड़ के गए. अगर हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैहि कुनूज़ शरीफ दौरी लाइन नाउज़ुबिल्लाह if Sheikh Sadi Rahmatullah, if Allah subhanahu wa ta'ala picks on any of his things and takes faults out of his life or anything, because he's a human being, then inshallah these 3 couplets could be a source and reason and sabab of his maghfirah, of his going into Jannah and receiving the intercession and sufarish of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And ourselves, we as well, we should on Friday night, Shabi Jum'ah, mashallah, many people have, classes and courses and programs on Friday night as well. Every Thursday night in all the markazis, Tablighi markazis, they have programs and bayans. They have, Tariq Jamil Sahab coming, they have many other ulama coming in English, Urdu, Bangla, and there's bayans and bayans going on. So, this is also from Ibn Mas'ud Raziyallahu Ta'ala anhu. Every Thursday night he used to lecture and he used to, give dawah to the people. And people used to say to Abdullah bin Mas'ud Raziyallahu Ta'ala anhu that, oh Abdullah bin Mas'ud, we like your bayanat, we like your khutbahs, we love your speeches, and we want to sit in your company and sohbah. So please give us some more time. Please speak more, please lecture us more, give us more bayanat and khutbah and talks. So Abdullah bin Mas'ud used to say that I have heard Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saying that don't do too many khutbahs. अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतना ज़्यादा बयानात और खुतबा बोलते रहना ये भी सही नहीं है. लोगों को, पब्लिक को और जो है अपने सुनने वालों को, give your audience, give your students, give your elders, give your time, give them some time as well to reflect, to ponder, and to digest whatever you have said this Thursday or Friday or whatever, And after every few days, after a break, then do another lecture. Because if you keep on having honey every day, first thing in the morning, and
what will happen? After every few days, you'll get a stomach ache, and then you'll get diarrhea. Then you're going to come to Maulvi Sahib with a stick. Okay, Maulvi Sahib, he said, honey is shifa, or nunazzilu fihi shifa'ul linnas. आपने फरमाया था कि हनी के अंदर, शहद के अंदर शिफा है और सुन्नत है. अभी मुझे दस्त शुरू हो गया है और जो है डायरिया आना शुरू हो गया है. तो भाई इमाम साहब कहेंगे कि तुमको किसने कहा कि रोज़ाना इस तरह गलन के गलन पीते रहना, सुबह सुबह नहर मुँह. पूछना भी तो था कि कितना पीना चाहिए, किस तरह पीना चाहिए, तरीका क्या है, सलीका क्या है. सिर्फ इतना मालूम कर लिया और सुन लिया या पढ़ लिया, हाँ, बगैर पूछे कि इसमें शिफा है, तो बस जो है ड्रम, हानि के ड्रम लेके पीते रहे सुबह सुबह, तो बीमारी हो के मर जाओगे, फिर जन्नत पहुँच जाओगे, और क्या होगा. तो इमाम साहब कई बार जे आपने खुला बयानो जे यो मधुर में जे शिफा से मधु खूब बाला जिनिस मधु कुरान शरीफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत. There's a hadith where one Sahabi had a child and his child became sick and ill. So he brought him to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and he said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, my son is sick for so many days and weeks. He's got stomach problem, he's ill, fetoishtanor. So please do something for him. So Prophet sallallahu alaihi wasallam said, give him honey. Unko honey pilao, shahad pilao. So Sahabi went home and he gave him honey. So he came back to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam next day and he said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it's gone worse than before. You told me to give honey. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, give him more honey. So he gave him more honey. So he came the next day and he said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, now he's on the deathbed. এখন আমার ফুয়া তো বিছনার উপরে উঠে গেছে কি তা কিতাব শুদ্ধ रहा आपने আমার ফুয়া ने सारे मारवा लगी होता है खैरानी मेरे बच्चों को मारने के लिए आप कह रहे हैं शहद खिलाओ ये कौन सा सुन्नत है और शहद है और दवाई है भाई कुछ शिफा होने वाला और जो है पेट की दर्द कम करने वाला कोई दवाई बताओ ये शहद पीते रहो शहद ये अभी मरने के करीब है क्योंकि আমার ফুয়া तो मरीज আর কি बिस्तर पड़ गई से था डायरिया सूट से तो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ओ भाई शहद खिलाओ दोबारा जाके शहद पिलाओ अरे आबार शहद खबाओ खेदे कज़ब बतनुक व सदक रसूलुक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेने যে তোমার ফুয়ার পেটে মিছা মাতে কিন্তু আমি হইলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি কোনোদিন মিছা মারতাম পারতাম না আমি যেখান কই ইখান হইল وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى कि तुम्हारे बच्चे के पेट झूठ बोल सकता है और झूठ बोल रहा है इसलिए वो अभी तक शिफा नहीं हुआ तुम्हें शक है मेरे बातों में और तुम्हें शक है शहद के अंदर कुरान फरमाता है कि फीही शिफाउल लिन्नास असलुम मुसफ़ा कुरान खोर जे शहद और मधुर में जे हसरी मधु से दियो है इता आर्टिफिशियल मधु से इस बार इता किच्चू ना है इता दखन सिनी बोरा दखयारा दखन यो दोड़ा हसरी मधु ज्ञानों का इंशाल्लाह ये देशा से लुकाई जगह होल हनी बी हनी हाउसेस हनी गार्डन प्राइवेटली मिले ऑनलाइन खालिस हनी हो खालिस शहद हो ये बाजारी हनी और मार्केट का हनी जो है और आजकल हमारे मुल्कों के अंदर भी शुगर डाल देते हैं तो वो वाली नहीं खालिस हनी रियल हनी विच डज नॉट सिट एट द बॉटम खालिस हानी যেটা হইব না এটা বুইতো না নিচে বুইতো না আর সুগার লাখান হইতো না এটা টপ টু বটম খালিস সুন্দর লাগবো দেখতে মজাও লাগবো আর গেরানো করব আর হি সুগারের মিঠা হইতো না ই আলাদা এক মিঠা ওলা হানি যদি আনতে পারো তো ওটা হইল কুরআনের হানি হাদিসের হানি রাসূলের হানি তিব্বে নবवी प्रोफेटिक मेडिसिन जिसको कहते हैं इमाम इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फिर हमारे हिंदू पाक के authors and writers they have written extensively and they have written in detail regarding tibbun nabawi regarding prophetic medicine straight from Quran and Sunnah in Bukhari Sharif in Tirmizi Sharif in all the other 6 books of hadith zeforani hoy siyasat tazrare hoy every single kitab of hadith Bukhari Tirmizi Muslim Ibn Majah Muwatta all of them they have one chapter called Tibbun Nabawi shoghaldin mein je apnar yo ase apnar title er bosor shomoy zeforani hoy so ei kitab Bukhari Sharif shoghol kitabor mein je ekta chapter ase jeta chapter er naam hoilo Tibbun Nabawi every book of hadith of the 6 sitta the 6 most authentic books they have a chapter called Tibbun Nabawi meaning the prophetic medicine. Why did Prophet ﷺ mention and give us advice and wisdom and some tips
regarding medicine. Allah Rasul Islam amrare dunya taison hidayat khorbar lagi, beheshto nibar lagi, duzakh taki basaibar lagi, balafat dekhaibar lagi. Then medicine ufre forte hadisor kitabo including Riyadus Salihin. Amra Riyadus Salihin for yaktakta. Oden dindori fora onna. Okta bitrawa ase tibbur nabawi. Even Riyadus Salihin sometimes we read every day in the evening. So the reason is that Prophet ﷺ said knowledge is three types. Let's answer that. Knowledge is three types. Ita karon hilo je Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam je ilim and knowledge ar gyan joto bidda ase joto science ase joto yo akhl ase er meze hasari knowledge jeta Allah Rasul take aise jeta akhiratul lagi jeta dra amrar fayda hoibo dunyar fayda hoibo akhirator fayda hoibo এটা হলো তিন রকম একটা হলো kitabullah. One is the knowledge, beneficial knowledge from the tongue of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from the Quran and Sunnah. First of all is the knowledge and science of the Holy Quran. Second type of beneficial knowledge is the knowledge of the Sunnah and Seerat and Ahadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. All the hadiths, all the sayings, all the agreements of Rasulullah, all the disagreements of Rasulullah, all the approvals of Rasulullah, all the disapprovals of Rasulullah, all the happiness of Rasulullah, all the things that he said when he was feeling sorrowful or grief. For example, when he was full of grief, Jibreel alayhi salatu wasalam came and gave him talbina and harisa. That's why talbina is sunnah. I have it myself every day in the morning. My in-laws and everyone, they have it as well. And whoever has it, they find it beneficial, mashallah. If you have it in the morning, with milk, mashallah, or sometimes with cereal, then all your hypertensionness, all your emotional problems, all your depression side of things, all your stress, all your anxiety, everything to do with your emotional side, everything to do with your nafs, your heart, your soul, your memory, your brain, all that mashallah very beneficial. Even stomach issues and many other issues. Even those people who do ruqya and hijama, they also use talbina, sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maybe a little bit expensive, but if the statement of my Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benefits me for sure and is also expensive, then alhamdulillah. I shouldn't be conducive, I shouldn't be tight. Why? Because it's from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It's from the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It's from the seerah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And this is the lesson that we should take from Rabiul Awwal classes and courses. This is the lesson that we should be taking from 25th of December. Not to hang a Christmas tree, but also to discuss, what does Quran say about Isa alayhi salatu wasalam? What does Quran and Sunnah say about Maryam alayhi salatu wasalam? Surah Maryam, Bible, the people of Bible, they don't even have a surah called Surah Maryam. We have a whole chapter on Surah Maryam. Even yesterday someone was telling me that his family member and children, even our own children, sometimes even somebody else in our masjid was one of my students. They were asking that why do they do Christmas? Why can't we do Christmas? Why do they believe in Joseph? Why can't we find Joseph? Tara Joseph mane Isa alayhi salam bafasla. Amra kita lagi khoyana bafe fodoiso. আমরা মুরব্বির জন্য সমান কথা হইছে এই দিনকু এটা কোনো নয়া কথা না আর এটা সবে হয় সব হুরতাইতে সব জায়গা তরাফতা अंडर জিকাইবো মেসা বহলদারে জিকাইবো উস্তাদ को पूछेंगे बच्चे कि क्रिसमस क्यों बनाते हैं सांता क्लॉज किधर है हमारे जो गिफ्ट वगैरह किधर है ये कहां से आते हैं कहां से लाते हैं और जोसेफ कौन है हु इज जोसेफ Quran says he was born without a father only with a mother as a mu'jiza and miracle mu'jizana तौर पर just like, and if they can't understand this, then tell them that the first person on earth, our great grandfather and first prophet and first human, everybody is united on this, and that person is Hazrat Adam alayhi salatu wasalam. They also have a version called Adam and Eve. The story of Adam and Eve and the apple and everything is a very similar story. So it does finish amra nizoro zana dorkhat amra bachaitoro khoa dorkhat tara di eyes amra re aya zika yaghzinish goro aya to logalok amra tara quiet horilai silent horilai to dur khelagi amatisna ita zikai to harna ita badme sab rigel guys imam sab rigel guys. If anyone asks us any question, our children, what do? Instead of answering them, instead of taking it as a positive challenge, instead of being kind to them, we tell them off. We tell them off, and sometimes our telling off will have a bad effect on them. Why? Because they're far ahead than us. They're bringing all that stuff from school, and sometimes it's an akida issue. 99% of the time they are talking sense.
99% of the time our children are coming with serious, 21st century challenging questions from school. They're not talking rubbish, my brothers and sisters and elders. They're not talking rubbish. They're talking sense, and their mind is working faster than us, and they have questions, and we cannot answer them. So what do? They're stuck. You're going to tell them off. You're going to tell them go and play. They didn't come to you to go and play. They know how to play better than us. You don't need to tell them to go and play. They want answers. They want solutions to their problems and questions. They want to know about Christmas. They want to know about Isa alayhi salam. They want to know about Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. They want to know about Islam. They want to know about who is Joseph. Do we believe in Joseph? They want to know about crucifixion. Do we believe in crucifixion? If you just say no, we don't believe in crucifixion, that's not enough. You have to give them the whole background. You have to give them the references. You have to give them the Quranic side. You have to give them their side as well. And you have to leave the conclusion on them after educating them. Then they will stay on the right path. And if they don't have the ability to come up with a conclusion, after educating them and after researching and all the information and after the tarbiyah of the parents and teachers and after the connection that we should be building up, from home and local masjid, etc., with the imam and teachers and everything, like mashallah we have the programs on 25th, walaikum salam, and not only once a year, we should have these programs regularly. If we have these programs regularly on Seerat Rasul sallallahu alayhi wasallam, and don't get me wrong, that even the life of Isa alayhi salam is included in the Seerah of Rasul sallallahu alayhi wasallam. Why? Because Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, Min ba'di ismuhu Ahmad, that after me, Isa alayhi salam said that after me a Rasul is going to come as the last and final Rasul and Prophet, and his name will be Muhammad and Ahmad, and if you people live till his time, then it will be compulsory on you to bring iman and belief on him and follow him forever and ever. He is the final prophet. And this is what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said and agreed with as well. And the only prophet whose dua was accepted, every prophet prayed to Allah, oh Allah, make us the followers of Prophet sallallahu alaihi wasallam, or make us the prophet and the guide, of that nation. Every prophet's dua was rejected in this aspect, and only Isa alayhi salatu wasalam's dua was accepted. We believe وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. He was not killed, he was not crucified, he was not murdered. Yes, they wanted to murder him, they wanted to kill him, they prepared and they were almost ready. And people go for Umrah and then they go to Palestine. They see that space, you can see on Google, where they wanted to kill him and the angels came and lifted him up safely. And he is in the 4th or 5th heaven. Allah subhanahu wa ta'ala is looking after him. He is going to come back to kill who? To kill the Antichrist, to kill the Dajjal. The Kuffar, the Freemasons, the Yahudis, the Jews, and all these other, dirty people, hidden, undercover, doing the dirty job, they know this very well. Their planes and their, all their machines, they say, they have KFR written on it already. When the Dajjal will come, his forehead will have kafara, kufr written on, or kafir written on. And only that Muslim, only that believer who is strong in faith and who is sincere with Allah and Rasulullah and a true ashik and follower of Rasulullah, only he and she will be able to say that you are Dajjal, regarding whom Prophet prophesied, and predicted, and I'm a believer of Islam and Quran and Sunnah. You are rejected, and the saying of Rasulullah is true. And then, the Dajjal will show all his magic tricks and everything. So, this preparation is already begun. Dajjal is already born. Dajjal is not going to be born later, he's already born. And who saw him? One of the Sahabi by the name of Hazrat Tamim Dari radiallahu ta'ala anhu. He was once going with a kafilah, with a group of people, and he came up to this seashore and out of town and city and country, and they came to this unknown place, and suddenly they wanted to, they wanted a building, they wanted to eat and everything, and they went into this church, this haunted house, and they saw this person, big massive person, chained, his hands and legs chained, and onto a throne or something, and they asked him, who are you? And he said, I am Dajjal. And they said, what's your proof that you are Dajjal? And he gave them all the proof.
and he told them that, is Muhammad born? They said, yes, we are the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I am Tamim Dari radiallahu ta'ala anhu, and we are living in the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Then he shook up and he said, oh, the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has come. That means the time of Qiyamah has come very close. The time of Dajjal coming out has also become close, and the time of all the signs, major and minor signs, Sagira Kabira signs of Qiyamah, they are also coming. So they went back to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and they told him everything. Ya Rasulullah, today we saw a strange thing happening. And they told him about Tamim Dari that they saw Dajjal, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, yes, this is true. You are not dreaming or asleep. Allah subhanahu wa ta'ala made you people meet him. So you know that Dajjal has already come. So you people till the day of judgment make preparation and make tayyari for him. Not to accept him, but to reject him. And who will accept him? Those with weak iman and faith will reject him, and those with will accept him, and those with strong iman and faith on Allah and Rasulullah will reject him and be successful. That's why, my respected elders and brothers, on 25th of December we have program yearly. This year, mashallah, I request everyone, those listening from home, mothers and sisters, they should come as well, and our brothers and elders and students over here, they should come as well. From 3 to 4 o'clock, students program and a competition of maktab. Inshallah, they'll be reading Quran and surahs and nasheed and songs they have prepared, mashallah. This year will be really good, really nice, really enjoyable. So please give some time. If you can't give the whole time, starting from 3 o'clock, then 4 o'clock for the elders, there'll be segregation upstairs, there'll be food as well, and till about 6 o'clock, within 2 hours, 2.5 hours, we will finish the program. And every year and after every few months, inshallah, we should have programs like this. And a very big scholar, everyone will be happy, inshallah. His English is very good, much better than mine. His Bangla is also very good, Urdu is also very good. He's the classmate of Sheikh Salim Dorad Sahab of Leicester, our Ustad. And he's a friend of mine, but mashallah, his classmate is our Ustad. So mashallah, there are 4 brothers, 4 alims, very famous, well-known, popular people, good speakers. The elder brother is Mufti Sadruddin Sahab of London, and he's the second brother. So inshallah, he will be coming. So everyone's requested to bring their family, sisters, mothers, everyone. There'll be space upstairs with segregation, and brothers over here, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq wa afiru da'wana rabbil alameen.